हेलो बच्चों, हम लोग टॉपिक 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम रैशनल नंबर इरेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म को पढ़ेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन और रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप्स का होता है। पहला टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको बताते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन कौन से होते हैं। बेस्ट नोन एग्जांपल है 1/2, इट गिव्स 0.5। सेकेंड एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, इज 1/4 एंड इट गिव्स 0.25। and third example is 7/10 and it gives 0.7. When any number divides completely the given number, we get terminating decimal expansion. So this is the decimal form of rational number. I mean to say, जब भी हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म पाएंगे तो उसका मतलब ये है कि ये रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म है, या हम ये कह सकते हैं वी कैन कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू रैशनल नंबर्स। ओके, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑलवेज रैशनल नंबर। नाउ वी स्टडी non-terminating decimal expansion. So best known example of non-terminating decimal expansion is 0.333. It goes on. Second example is 0.1666. It goes on. And third example is √2 1.4142. It goes on. And third example is √3. Value of √3 is 1.732. It goes on. So here are the decimal expansion which are non-terminating. We can see goes on, goes on, goes on. But there is a difference between some of them. It is non-terminating but having regular pattern. It is also non-terminating but having regular pattern of 666. It has regular pattern of 333, but it does not have any pattern, and it does not also have any pattern. So we can divide non-terminating in 2 types. Before that, I would like to tell you non-terminating are of can be rational numbers, also irrational numbers. So here non-terminating are of 2 types. One is non-terminating repeating, second is non-terminating non-repeating. तो एग्जाम्पल ऑफ non-terminating repeating, repeating को हम लोग recurring भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है 1/3 which is non-terminating but repeating. Second example है 1/6 which is also non-terminating but repeating. When we get any decimal expansion non-terminating but repeating, that decimal expansion is known as rational number. These are decimal form of rational number. Clear? But here we have non-terminating, non-repeating decimal expansion. An example of that is √2. Very simple and common example. Second example is √3 1.732. It goes on.
here after decimal, no pattern, there is no pattern, there is no repetition. So this decimal form is known as non-terminating, non-repeating, and it is known as irrational number, or we can say we get this form by irrational number. When we find a square root of any number, we get this type of pattern where there is no repetition. So it is irrational number.